द कश्मीर फाइल्स में इवेंट्स एकदम ब्रूटल और एक्सप्लोसिव मैनर में शोकेस किए गए हैं। विवेक रंजन अग्निहोत्री जी के नैरेटिव ऑडियंस के इमोशंस को ट्रिगर कर देते हैं, क्योंकि इस मूवी में इंक्लूडेड है एक्टर्स की फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस, ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड इमोशनली मूविंग सीक्वेंसेस और कुछ ट्रू बार्बरिक सीक्वेंसेस भी। हेलो मूवी लवर्स, आई एम समक्ष मल्होत्रा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द कश्मीर फाइल्स इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट बीइंग द मूवी, हाउ इट वाज अ मास्टरपीस। सेकंड बीइंग इसे और बेटर कैसे बनाया जा सकता था, एंड थर्ड बीइंग व्हाई सच मूवीज आर रियली very important for all of us to watch. But before starting, do remember to subscribe to my YouTube channel and press the bell icon while subscribing, so whatever I upload next, you get the notification first. Movie जो है that revolves around the journey of a young student that is played by दर्शन कुमार, और वो पूरे इन्फ्लुएंस के अंडर आ चुके हैं by पल्लवी जोशी। लेकिन अब इन दी एंड दर्शन कुमार जो है वो फाइनली लर्न कर लेते हैं अबाउट द जेनोसाइड दैट हैपेंड टू हिज ओन पीपल। मूवी की स्टोरी लाइन बहुत सिंपल है। इट इज द ट्रू पोर्ट्रेयल ऑफ ऑल द स्टोरीज अबाउट व्हाट हैपेंड विद कश्मीरी हिंदूज एंड द फेट दैट दे मेट एट द हैंड्स ऑफ टेररिस्ट। इट शोज कि कैसे वो जो यंग लोग थे, हाउ द यंग मेन एंड वुमेन दे आर ब्रेन वॉश्ड एंड हाउ दे हैव टू बिलीव कि जेनोसाइड जो है वो कश्मीर में कभी हुआ ही नहीं था, एंड हिंदूज आर सिंपली लेफ्ट विद दिस रिपीटिंग टेल ओवर द पास्ट 30 years, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इनका प्रोपेगेंडा जो है वो चल रहा है to eliminate this exodus and genocide from the history of India. While watching this movie, I had a lot of scenes where I ended up sobbing, thinking कि ये सब reality में हुआ है, and these scenes is what brings us to the positive aspects of this movie. The first one being the emotional sequences and its honest portrayal. चाहे वो बिट्टा कराटे के scenes हो जहाँ पे उसे इतना brutal terrorist दिखाया है, या फिर bloodsheds, most of the scenes were portraying the truth of what happened in the early 1990s. In one scene जहां विवेक अग्निहोत्री सर रिक्रिएट करते हैं द मैसेकर ऑफ नदी मार्ग विलेज, जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में ही है इन जम्मू एंड कश्मीर, हिंदूज आर शॉट एट पॉइंट ब्लैंक रेंज 1 by 1, और उसमें सिनेमा की पिन ड्रॉप साइलेंस में आई रिमेंबर आई वाज क्राइंग इन माई सीट विद ईच बुलेट बीइंग फायर्ड। 24 Hindus being killed at that fateful night of 2003 by terrorists जो कि आर्मी यूनिफॉर्म में ड्रेसअप हुए थे, and they murdered Hindus. With one terrorist also saying कि इसे भी मार दिया जाए, and an infant is shot, एक बहुत ही छोटे से बच्चे को भी मार दिया जाता है, and I mean in front of my eyes all these scenes were coming कि in that era ये सब हुआ होगा, and I burst into tears in the theater there and then. The second such scene was there was a scene जहाँ पे एक वो telecom engineer है, he is brutally shot multiple times, he hides in a rice barrel, और उनकी wife को जो है वही rice mixed with his husband's blood feed किए जाते हैं just so that she could protect the rest of her family from being killed. And ये scene जो है, it's the recreation of the brutal murder from 1990s when terrorists came for BK Ganju, and he hid in the rice barrel. He was shot multiple times, and in that rice, his rice-soaked blood was forced fed to his wife. और यही scenes है that just makes you cry your heart out, because this genuinely happened in reality to somebody. And then the third scene was again something similar, गिरजा टिक्को, जो कि एक हार्ट रेंचिंग स्टोरी है इस मूवी की, वो भी इसमें इंक्लूडेड थी, एंड हाउ शी वाज जस्ट ब्रूटली मर्डर्ड, एंड हाउ उनके मर्डर ने आगे फ्यूचर में क्या इवेंट्स अनफोल्ड किए थे, दैट इज ऑल्सो डिपिक्टेड इन दिस मूवी। एंड डिटेल में तो नहीं शो किया अबाउट व्हाट दिस मर्डर वाज, हाउ इट लेड टू हर मर्डर, but like the reality shows that she was gang raped for days and eventually she was murdered and disrobed by the terrorists. इन सभी सीन्स में जो हमने डिस्कस किए हैं काफ़ी इमोशनल वल्नरेबिलिटी दिखाई हुई है, एंड इट इज़ लाइक शोइंग इनफ टू द ऑडियंस कि सब लोग बाद में घर जाकर गूगल पे या कहीं और इसके बारे में और रिसर्च करें टू नो दैट दीज इवेंट्स जेन्युइनली हैपेंड इन द रियल वर्ल्ड, एंड दे कैन रीड मोर अबाउट इट ऑन द इंटरनेट ऑन डिफरेंट आर्टिकल्स, एंड देयर आर मोर वीडियोज अबाउट ऑन यूट्यूब एज वेल विद रियल विक्टिम्स विद रियल एविडेंसेस। विवेक अग्निहोत्री जी इस मूवी के थ्रू फर्दर जान सकते हैं अबाउट द नेकेड ब्रूटैलिटी unleashed by the terrorists against the Hindu community some 30 years, 3 decades ago. But was there any scenes like these that we just discussed that made you cry? Let us know in the comments below, and we can discuss this further on how emotionally wrenching all those scenes were.
The second positive point about this movie was the powerful performances by all the actors. Anupam Kher as Pushkar Nath delivered his strongest and the most convincing performance. Given that Anupam Kher himself वो कश्मीरी पंडित है और अग्निहोत्री जी को इससे बेटर कास्ट नहीं मिल सकती थी. एंड राइटली सेड कि जब अनुपम खेर इस मूवी की शूटिंग कर रहे थे, he said in an interview that he was crying throughout. And after watching the movie, we can see why this is the reality. आशा सोमली जो है वो प्ले कर रही हैं पुष्कर्स डॉटर इन लॉ. शारदा पंडित जो है जिनके सन्स शिव एंड कृष्णा है, दे गो एंड मीट डिफरेंट फेट्स इन द आफ्टरमैथ ऑफ दिस ट्रेजेडी. फारूक मलिक बिट्टा जिसे प्ले किया है बाय चिन्मय मादलेकर ने, एंड मतलब एकदम बहुत ही ब्रूटल मेनेसिंग टेररिस्ट दिखाए गए हैं. एंड हाउ ही इज द ब्रेन बिहाइंड द एंटायर एक्सोडस एंड जेनोसाइड. एंड ही दैट रोल सेंस शिवर्स डाउन योर स्पाइन ऑन हाउ इनह्यूमन कैन अ पर्सन बी, और हाउ ही वाज किलिंग दोज इनोसेंट पीपल. The scene with the grown-up कृष्णा पंडित जो दर्शन कुमार ने प्ले किया है, it's hard hitting, especially वो portions जहाँ पे प्रोफेसर राधिका मेनन पल्लवी जोशी ने जिन्हें प्ले किया है वो एकदम सक्सीड हो जाती हैं in brainwashing him until he himself travels to Kashmir to find out the truth. Supporting cast में included है मिथुन चक्रवर्ती जो प्ले कर रहे हैं IAS ऑफिसर ब्रह्मा दत्त, अतुल श्रीवास्तव जो प्ले कर रहे हैं जर्नलिस्ट विष्णु राम, Dr. Mahesh Kumar who's played by Prakash Beliwadi, and police officer DGP Hari Narayan who's played by Puneet Isar. They all are able to support the entire story of the movie, which helped the story go further, and how they all were the helpless victims to this massacre in Kashmir. The third point about the story is Agnihotri's research about this tragedy. So this is one place where we'd like to give kudos to the entire team, because जो इस movie को बनाने के पीछे research गई है about this entire tragedy, it shows कि हर scene कैसे shoot किया है with nearly 3-hour length of the film. Like the Kashmir Files, it's not an easy watch. You will definitely cry, you will definitely sob, and you will also feel scared watching this tragedy that happened to lakhs of men and women जो अपने ही कंट्री में रेफ्यूजीज बना दिए गए थे जस्ट ओवरनाइट. ये सब चीजें तो डेफिनेटली इंक्लूडेड हैं एंड विद अटमोस्ट रियलिटी पोर्ट्रे की गई हैं, एंड द सीन्स आर शॉट बाय लुकिंग एट द एविडेंसेस दैट आर लेफ्ट बिहाइंड दिस मैसेकर. बट इतना ही नहीं, द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉर्ड शिवा इन द कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, चाहे इसकी बात हो या कोई भी वेल डॉक्यूमेंटेड ट्रेजेडीज हो जो 1990s या उसके बाद हुई हो, वो सब इसमें कवर्ड है. अगर हम कंपेयर करें तो शिकारा भी एक ऐसी मूवी थी विच वॉज डायरेक्टेड बाय एंड प्रोड्यूस्ड बाय विनोद चोपड़ा जी, एंड उन्होंने भी कोशिश की थी कि स्टोरी को आगे लाया जाए कश्मीरी पंडित्स की कहानियों को, बट दैट वाज जस्ट अ मूवी जो एक मेयर लव स्टोरी बनकर रह गई थी, एंड दिस वन एड्स अ लॉट मोर टू इट. Now turning the page and flipping the coin and discussing how this movie could have been better is number one, that making it have an effect that would have been long lasting, because ये एक ऐसी movie है which genuinely we also want कि इतनी impactful रहे to watch, इतनी that it just digs into the mind of people and it stays with them forever. But somewhere I'm pretty sure this is one of those movies जो कहीं ना कहीं लोग देखेंगे, it will be talked about for a couple of weeks or maybe months, but then it'll be long forgotten. Although for this talk and even for these weeks talk, we are thankful to the director, but eventually something of that sort should have been made कि ऐसी, for example, there are legendary movies जिन्हें अब तक हम देखते हैं, अब तक हम याद करते हैं, which are about true past events, and this could have been turned out into something similar, कि ऐसी मूवी बनाते कि in the end उसे जन्मों जन्मों तक याद किया जाता या उसे काफ़ी टाइम तक उसके बारे में बातें होती. It could have been made in such a way that more limelight could have brought into it. And how this would have been possible is what's the second point, that the film's casting could have been worked out for better. क्योंकि overall तो every actor was fit for the role, but we definitely needed some famous actors, even more famous names included in this particular movie, so that this could be watched by mass audience. Given अभी भी ये movie बहुत कम screens पे release हुई है, but eventually it's getting a positive response on social media and offline as well. But अगर इसमें कोई ना कोई famous names included होते, that would have even given it a higher and a heavier platform, so that इसको और ज़्यादा बड़े स्केल पर रिलीज किया जाता and the story could have been reached out to more people.
ओवरऑल अगर हम बात करें तो कश्मीर फाइल्स इज गेटिंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स एवरीवेयर एंड पीपल आर थैंकिंग द मेकर्स ऑफ दिस फिल्म कि कैसी हार्ट रेंचिंग स्टोरी दिखाई है उन्होंने, एंड इवन कैसे हार्ट रेंचिंग सीन्स को, जेनोसाइड को इतनी सेंसिटिविटी के साथ पोर्ट्रे किया है। नेटिजन्स की बात करें सो दे आर ऑल्सो प्रेजिंग द एंटायर स्टार कास्ट फॉर द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज, और अगर हम जनरल ऑडियंस की बात करें दैट दे आर गेटिंग सुपर इमोशनल आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द थिएटर्स, एंड the movie is neither dramatized enough nor it is like a documentary type storytelling, and that's exactly where the exciting part of the story works out perfectly well, and that is why this movie is being received very well by the entire audience. That was the video, guys. If you liked it, do remember to hit the like button and share it with all the movie lovers you know, and with all the people who you want should watch this movie. And if there's anything that you think I missed out on, definitely let me know in the comments below so I can include that in the next video, whatever I'll be releasing. Also, remember to press the bell icon while subscribing to my YouTube channel so whatever I upload next, you get the notification first. Also, follow me on Instagram and Twitter. The handles are right in front of you. Thank you so much.